violation of human rights rooted in caste-based and gender-based oppression, and were unable to address the social ostracism and stigma that Valmiki communities face. Despite existing laws, this form of forced labor has not been abolished. It remains deeply entrenched in the social system, violating the human rights of over 1 million women. अब ये गंदी का काम ही सब मरते दिन में वही काम मरेगा जब छूटेगा। In 2001, a Dalit untouchable child laborer was killed in an illegal factory in the state of Madhya Pradesh due to the negligence of upper caste owners. The death of the Dalit child was not investigated due to his caste, absolving the owners from any responsibility. This event triggered 4 young Dalit activists and their professor to start a campaign for the civic and human rights of untouchable communities in their state. They were determined to destabilize the caste structure from its very base by eradicating manual scavenging, the most egregious oppression within the caste hierarchy. जो वाल्मीकि समाज की खासतौर पे महिलाएं जो मेला ढोने का काम करती थी उनके साथ बैठ के बातचीत की और रणनीति फिर हमारी पुरानी एक समझ के साथ और इन बहनों के साथ बातचीत करके ही एक साझी रणनीति बनी। The activists started in Madhya Pradesh, where they established a relationship with the manual scavengers and their families in order to understand the women's situation and learn about the oppression they suffered from. These 4 women were part of the first generation of liberated scavengers who had the courage to initially collaborate with and later on lead the movement of Jansahas. और करीबन ये तो परंपरागत से चला आ रहा है जिसको लोग जागीर बोलते हैं। कुछ लोग अपना निजी काम समझ के ये करते हैं और ये वाल्मीकि समुदाय करता है ये काम। For many women, this was the first time speaking publicly about the problems they faced. और मैं मेला ढोने का काम करती हूँ वाल्मीकि समाज की मैं और इसमें हमारे को झाड़ने में किसी पहले हमको समझता नहीं था कि कैसा ये झाड़ना छोड़ना है, कैसा व्यवहार है। हम जिस घर जाते हुए एक रोटी देते और कुछ पुराने कपड़े फटे टूटे दे देते हैं, उसमें हमारा कोई गुजारा नहीं होता था। किसी घर 20 किलो गेहूँ देते साल के, मतलब जिससे बदबू भी आती है और मतलब हर तरह के ये फोड़े फुंसी हो जाते हैं हाथ पाँव में, सिर में बाल झड़ने लग जाते हैं। जाके ये काम दूसरे दिन जाके काम करना पड़ता है। वो बारिश में तो काफ़ी परेशानी आती थी। बारिश में तो पानी में पूरे खराब हो जाते थे, वो अपने ऊपर ही गिर जाता था। Jansahas worked also with another group which was subjected to manual scavenging, but who did not belong to the Hindu religion. हम हेले समुदाय, हेले का मतलब है मुस्लिम। मुस्लिम है पढ़ना वो बहुत पुराने के बात है, जो इस हिसाब से चलते थे तो वो इसमें है। हम नहीं तो न्यू तो मुस्लिम है जैसे, पर ये काम पिछड़े वर्ग में करा हुआ है तो हम पिछड़े वर्ग में ही हैं। Throughout the ages, Hindu untouchable Dalits were lured into Islam with the promise of equality in the eyes of a single God. The caste stigma was so strong, however, that it carried over into their new religion. Till contemporary times, caste prevails within Muslim communities, where the lowest caste are the hellas, the manual scavengers. स्कूलों में आती थी दिक्कत बच्चों को, मदरसे में, मस्जिदों में, सब में दूर बिठाते थे, स्कूलों में सबसे पीछे, और किताब को भी हाथ नहीं लगाते थे और मटकी से पानी भी नहीं पीने देते इनको बच्चों को। Contrast to Hindu Dalits, Muslim Dalits are not protected by law against caste-based discrimination and atrocities and cannot benefit from government rehabilitation schemes. Even if Hellas and Valmikis come from different religions and have a different legal status, they are nevertheless subjected to the same kind of oppression. कोई के घर एक रोटी देते, किसी घर एक साड़ी देते फटी हुई और 5 रुपए देते, वो भी रोटी ऐसी डालते टोकरी में। अब दूर से मतलब छित करते अपन से कि ये मेला ढोने का काम करते हैं, इनको हाथ नहीं लगाना अपन ने। हाँ, वही जैसे कि कहीं पे अपन अगर पानी भर रहा है, एक ही समूह में पानी भरते जैसे सब तरफ के लोग, तो वहाँ पानी भरने जा रहा है वाटर में, तो वो बोलते कि अब हमारा बर्तन नहीं भरा जब तक आप हाथ नहीं लगाओगे। भले उनका वो अंदर डालने का है, वो बर्तन ढूंढ रहा है उनका, अपन हाथ नहीं लगा सकते उस बर्तन को, वो हटा ले उसके बाद ही अपन पानी भरते थे। ऐसा तो हमें तो इतनी दूर खड़ा करते, मतलब हमको थोड़ी बहुत दूर खड़ा करते, उनके बर्तनों के पास नहीं आने देते थे।
फिर हम वो भर लेते नहीं, फिर हम भरते नहीं, तो वो पूरा बर्मा धोते थे, पूरा हैंडपम्प को धोते थे, फिर वो पानी भरते थे। मतलब हम इतने गंदा हमें इतना गंदा समझते थे कि वो बर्मे को भी धोते थे, उसके बाद वो पीने का पानी भरते थे। After listening to the woman's situation, Jansa Has held community meetings to inform the women that the caste-based discrimination they were being subjected to was against the law and that scavenging was illegal according to both international and national law. कि ये काम जो है कानून के खिलाफ भी है और इंसान की एक गरिमा के खिलाफ भी है, और हमारे देश में, हमारे संविधान में भी ऐसी कल्पना नहीं है कि इंसान इस तरह के काम में इस तरह से रहे, एक तरह की बेगार है ये। But this was not enough. Jansa Has faced resistance from the scavenging community, who argued that their wages were a source of livelihood. हमने कहा कि ये तो कोई रोज़गार नहीं है। जब उनको पूरा आंकड़ा बताया कि एक साल भर में अगर आप इतने घरों में सफाई करते हैं तो इसमें कितना पैसा मिलता है, उसमें क्या क्या मिलता है। कि ये मेला ढोना अच्छी नहीं है, इसमें आपको सम्मान नहीं मिलता और इससे क्या फ़ायदा है आपको। मैंने कुछ 200-300 रुपये, 200-250 रुपये मिलते महीने के, और कुछ भी नहीं है उसमें लाभ। तो बोले एक सम्मान की ज़िंदगी जीने में और इसमें बहुत आपने को वो है। They asked the women scavengers whether these starvation wages justified the consequences and untouchability in their villages and the discrimination their children had to face at school. तो इनने 9वीं पढ़ाने छोड़ दिया इसी कारण कि तुम्हारी मम्मी तो ये गंदा काम करती है, मतलब इन सहेलियों भी साथ नहीं रहती थी इनके। बोला भी कि काम छोड़ दो, जहाँ मम्मी काम करती थी वहाँ के सभी लड़के यहाँ स्कूल आते थे पढ़ने, तो वो बोलते थे कि तुम तो जाओ, हम तो तुम्हारे साथ नहीं खेले, तुम तो भंगियों के लड़का लड़की हो। तो हमें बहुत बुरा लगता था। तो हमने फिर मम्मी से बोला, पापा से बोला, तो पापा ने भी बहुत बोला अम्मी को। In many cases, Valmiki and Hela mothers decided to leave manual scavenging in order to spare their children from caste-based discrimination at school. After years of oppressing these communities, the upper caste villagers resisted the notion of having the lowest of untouchables change their ways. It was evident for Jansa Has that for these women to be able to liberate, they needed a larger support system where government officials and upper caste villagers were also part of the process. On February 21st, 2002, 26 women publicly burned the baskets that they had previously used to collect the excrements of upper castes. 21 फरवरी 2002 को ये काम हमारे यहाँ से पूरी तरह बंद हो गया। इसमें जो भौरासे में जो महिलाएं काम करती थी उसमें से करीबन यहाँ पर एक हेला समुदाय है और वाल्मीकि समुदाय में से 26 लोग काम करते हैं। The women made sure to demolish all the dry latrines in government buildings and posted notices on the homes that still had them, stating that they were in violation of the law. कि आप झाड़ने क्यों नहीं आ रहा है? तो मैंने क्या कि गरिमा अभियान की तरफ से मेला ढोना सब बंद हो रहा है। मैंने क्या कि नोटिस भी निकले, सब घरों घर नोटिस भी दिए थे उनको, सरकारी काम उन दिए थे कि ये तुम लेटिंगों ने बना लो, फिर भी उन्होंने धीरे धीरे तो हमने एक तरह से ये बनाया कि हम पीड़ित नहीं हैं, हम विक्टिम नहीं हैं, हम बदलाव के लीडर हैं। तो फ्रॉम विक्टिम टू लीडर। लोग घर आन के कहते थे कि जब 50 देते हैं हम तुम्हारे को 200 रुपये देंगे, पर ये काम कर लो वापस तुम हमारे घर आन के। तो हमारे घर वालों ने सबने बोला, जैसे एक ही जुट होके सबने, कि हमें ये काम नहीं करना तो नहीं करना। क्योंकि पुलिस की धमकी दे दी कि ज़्यादा करोगे तो पुलिस हमारे को भी जेल होगी और जो करवाएगा उसको भी जेल होगी। तो मैं कुछ दिन तो गई नहीं मैं झाड़ने वहाँ पे। मैं तुम शौचालय कर रहे, आप खुद ही फेंको, ये मैं नहीं फेंकूँगी। हमारे को किसी ने लालच नहीं दिया छोड़ने का, ना किसी ने पैसे दिए, हमने मान सम्मान के लिए छोड़ा। This was only the beginning. These liberated women joined Jansa Has and began going village to village in popular marches called yatras, spreading the word of liberation from manual scavenging. हाँ, जो मेला ढोने का काम जो यहाँ पर भौरासे में बंद हुआ, उसके बाद हमने कई जगह रैलियाँ निकाली, 4-4, 5-5 दिन जगह हम बाहर रहे और जो वाल्मीकि समुदाय उन्हीं को समझाया और वो काम उन्हीं के द्वारा भी बंद किया। एक तहसील से बंद हुआ, तहसील से फिर एक जिले में बंद हुआ और जिले से फिर शहर में। बेटा बेटी के खूब बनावा, मिलकर मौज मनावा। वो करते गए, फिर दूसरे गांव भी हम दूसरों औरतों को समझाने वास्ते गए कि अच्छा काम नहीं है, गंदा तुम छोड़ दो। हमने यात्रा भी निकाली, यात्रा में भी गए हम,
दूसरी जगह, उनका सबका काम भी छुड़वाया हमने। तो जितनी हमने यात्राएं आयोजित की थी उसमें मुख्य लीडरशिप इन महिलाओं की, बहनों की थी, पर फिर धीरे धीरे महिलाओं की अपनी ताकत बन गई, तो वो भी उनके अंदर से एक बदलाव करने की चाहत भी थी और उनको एक तरह का ये मंच मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। In 2012, Jansahas organized the first ever nationwide yatra in which 50,000 women participated. At the end of the yatra, Jansahas marked the liberation of over 15,000 women in a span of 10 years. Jansahas acquired national and international recognition from the Indian government and numerous international organizations. Jansahas is probably the one organization in India that is most effective on countering and fighting manual scavenging because of their approach, in the sense that they engage with the community in its entirety. The United Nations watched this process with great interest, and I think we all congratulate the incredible job that Jansahas did in, I'm saying it wrong, right? Thanks to the political advocacy carried out by Jansahas and the liberated women that form part of this movement, the United Nations and the European Union recognized manual scavenging as a form of caste-based oppression for the first time in history. This discrimination comes to an immediate end. These facts are horrific, and therefore I support the call for the